Good morning. Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. Today we will understand about the collection of a fraction. Once again, that means we will revise the topic that we have already learned yesterday and then we will proceed towards the next topic. Okay, so everyone focus towards me. सभी के सभी लोग मेरी तरफ focus करो. Okay, so now here what we have to find? Listen carefully. We have to find the fractions of a collection. Okay, listen carefully. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The 8 objects are in first row and the 8 objects are in the second row. Okay, that means there are 2 rows. That means I have the 16 objects. How many objects I have? 16 objects. So listen carefully. This 16 objects together called as one whole. Okay, ये जो 16 objects है, it is together called as one whole packet. So one whole packet consists of 16 objects. Okay, 16 objects एक पैकेट के अंदर में है. Okay, so now what we have to find? We have to find the 1/4 of 16. 16 का क्या करना है? 1/4 पार्ट करना है. That means listen carefully. What is meant by 1/4? हम लोगों ने 1/4 पढ़ा, ठीक है. What is meant by 1/4? When the single object, ध्यान से समझो, ठीक है. When a single object is divided into 4 equal parts. Yes, what is meant by this 4? This 4 is in the denominator. 4 जो है वो कहाँ पर है? Denominator में है. And this denominator tells us, क्या बताता है denominator? Denominator tell us the total number of parts. Okay, total number of parts. This tells us about the total number of parts, and this is a number of parts that we are considering. That means out of the 4 parts we have to select only 1 part. Okay, so what we have to do here? We have to, ध्यान से, we have to divide this complete object into 4 equal parts. है ना? What is meant by 1/4? The meaning of 1/4 is when the complete object is divided into 4 equal parts, then each part is called as 1/4. तभी एक part 1/4 होगा. Okay, so now what we have to do? We have to find the 1/4 of this complete object. Okay, इसको क्या करना है? 4 भाग, इसको 4 टुकड़े करना है, ठीक है. वो भी इक्वल टुकड़े करना है. That means we have to create the pieces. That means 4 equal pieces of 16 object. इन 16 को क्या करना है? 4 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना. सो व्हाट वी विल डू? लिसन हियर. वी नो दैट डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. यस, व्हाट वी नो? डिवीजन मीन्स इक्वल शेयरिंग. इक्वली शेयर करना है हम लोगों को एरिया. यस, व्हेन द वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइड होना चाहिए चारों की चारों, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ 1/4 पार्ट. है ना. हम लोग ऐसा थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन नॉट डिवाइड लाइक दिस. दिस इज नॉट अ, here the object is not completely that means here the object is not equally divided, so that is a wrong. ये गलत है, ठीक है. we have to divide like this. अब ध्यान से देखो. so what we will do? simple है. if you want to find the collection, sorry, fractions of a collection, look on page number 160, 160, 161, 161 and 162, that is 162. इन तीनों पेजेस पर जितने भी क्वेश्चंस है, whatever the questions are there, they all are based on collection of a fraction. ठीक है. आपको क्या करना है? सिंपल, you have to divide by denominator. सीधा सीधा डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है. सो एज यू कैन सी हियर, डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट? द नंबर विच इज डाउन साइड. ओके, द नंबर विच इज डाउन साइड, इट इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है. And the number which is at upward side, that is your numerator. That means the 1 is your numerator. Yesterday I have sent a one worksheet. उनमें से किसी ने मुझे अभी तक वापस नहीं भेजा है. You have to solve that worksheet and send to me. फटाफट से मुझे सेंड करना स्टार्ट करो. ओके ओके, देन नाउ इट्स ओके. यहाँ पर आ जाओ फिर से. ओके, so that is 1 is your numerator, the number which is at upper side, that is your numerator, and the number which is at down side, it is your denominator. So what we will do? We will write this 16 as it is. Listen carefully. We have to divide 16 by 4. We will divide the 16 by 4. अब 4 के टेबल में 16 कब आएगा? 4 1 जा 2 जा 8 3 जा
4 fours is 16. 4 fours is 16. So 4 fours is 16. That means what? That means 1/4 of 16 is 4. When you will divide the 16 by 4, that means when you will find the 1/4 part of 16, you will get 4 equal parts. तो देखो कैसे होते हैं. I am creating 1, 2, 3 and 4. Okay. Now here there are 4 objects in each group. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. That means the complete packet is divided into 4 equal parts having 4 objects. है ना. So what we will do here? We will color the 4 objects. तो हम लोग 4 objects को color कर देंगे. Got it everyone? How to find the 1/4? It is very simple. Okay, don't write this one. Look everyone here. Listen carefully. If you want to find half, ध्यान से देखो. अरे everyone look front. I am telling you one thing. So please look front. Okay. Listen here. Now 1. Again it is wet. Okay. We will find 1/2. It is 1/2. Okay. This is a 1/2. 1/2 of 12. Okay. I am taking one more example. 1/3 of 12, and the one more example, that is 1/4 of 12. Okay. Listen carefully. Here there is 12. We have to find half of 12. 12 का आधा करना है. So how can we do it? Look everyone here. We will divide the 12 by 2. We will divide the 12 by 2 is equal to 6. Listen here. This is a question. That is the answer. मैं उल्टा लिख रहा हूँ. ठीक है. Okay. So that is the answer, which is 6. If you want to find 1/3 of 12, that means we have to create. What we have to do? We have to create 3 parts of 12. 12 के कितने parts करने हैं? 3 parts करने हैं. Okay. Here we have to create 2 parts of 12. 12 के कितने parts करने हैं? 2 parts करने हैं. So 6 and 6 you will get 12. Okay. So हम लोग क्या करेंगे? 12 को 3 से divide कर देंगे. Here also what we will do? We will divide this 12 by 4. Okay. तो ये second वाला देखो अभी कैसे करते हैं. Okay. So what we will do here? We will divide 12 by 3 and you will get 4. Okay. And if there is 1/4 of 12, so we will divide 12 by 4 and you will get 3. Got it everyone? Simple है. If you want to find out the fraction of any number or the collection, ऐसे questions आपके exercise 10.3 में है. These type of questions are available in exercise 10.3 and page number is 162. 162 page number पे last में this type of questions are there. Got it? I hope you understand how to find out the fractions of a collection. It is very simple. What we have to do? We have to divide this number. इस number को direct divide करना है by the denominator. Okay, हमको क्या करना है? 16 को directly 4 equal parts में divide करना है. And we know that the division means equal sharing. We will directly divide this number by the denominator. You will get the answer. ठीक है. अगर यहाँ पे objects है तो objects को color कर देना. And if there is not any object, so leave that as it is. ठीक है. Got it everyone? If you have any queries, please ask. And कोई भी queries हो direct आप message करिए. Okay, I will try to solve your problems. So quickly note down in your maths notebook. ठीक है. This is a first example. Note down this first example and this is the second example. इन तीनों को इसके नीचे लिखना. ठीक है. First of all note down this, then this one. So I am giving the 30 seconds. अब उसे pause कर लीजिए और इसको फटाफट से note down कर लीजिए. Okay. And then we will proceed towards the word problem. Hello.
Okay, dear students, so I am taking some examples from exercise 10.3 which is on page number 161 and 162. ठीक है. So open the page number 161. There is one example. I will take only one example. ठीक है. And rest of the question you have to solve similarly. जैसे मैं question solve करने वाला हूँ वैसे ही आपको solve करना है. ठीक है. Don't take attention. It is very easy. Just relaxed. Okay. So now this is a question number 3 on page number 161. There is a kite. देखो kite है वहाँ पर. हाँ, okay. उसके ऊपर pencils है and there is at the top there is a balloon. So what we have to do? So we are solving the question in which there is kite. जहाँ पर kite वाला question हम लोग solve करने वाले हैं. ठीक है. And बाकी आप लोग कर लेना. Which is very easy. Okay. So now listen here. यहाँ पर there is no space. यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ. ठीक है. So but you have to write here. ठीक है. जहाँ line है वहीं लिखना. Okay. So but don't write now. First of all look front. Okay. So here we have to understand how to solve a question. Okay. So listen here. Let's draw this line here. ठीक है. It is visible in camera. Okay, it is visible. Okay. Now listen here. What we have to do? We have to understand about the fractions of a collection. What we have to find? We have to find the fractions of a collection. And there is a question number A on page number 161. There is written, find the half of the quantities. यानी half का meaning क्या हो गया? 1/2 means half, है ना? Half 1/2 होता है. So here we have to find the half of these objects. So first of all, what we will do? We will write half 1/2 of. अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? First of all, we have to count object 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So these are 10 objects. So what we will write? We will have to find the half of 10. Half of 10 objects का आधा करना है. Okay. So now I already told you that we have to divide the number by denominator. Denominator मतलब नीचे वाला number. The number which is at the down side or at the bottom side. And the number which is at the upper side, it is your numerator. And the one sentence is very important. Denominator tells us the total number of parts. ठीक है. हो सकता है कि आपके fill in the blanks में आ जाए. ठीक है. Denominator always tells us the total number of parts in the object. Okay. So now here what we have to do? We have to create 2 parts of 10. 10 को क्या करना है? आधा आधा करके 2 parts में divide करना है. Okay, so what we will do? आधा आधा. That means what? We have to create the half of 10 objects. So we will divide. इस 10 को divide कर देंगे 2 equal parts में. That means we have to divide the quantity by 2. Okay, so I will divide it by 2. So 2 के टेबल में आता है 10. आता है क्या? आता है. How many times? So let us pick the table of 2 up to till 10. 2 1s are 2, 2s are 4, 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10. 5 will be answer. Okay, and now we know that the answer is 5. When we will create the 2 parts of 10, you will get 5 objects in each group. दोनों ग्रुप में 5 रहेंगे, है ना? तो 1 2 3 4 5 it is in first group. 1 2 3 4 5 in the second group. तो अब हम लोग 5 ऑब्जेक्ट्स को चमका देंगे. दैट मीन्स कलर कर देंगे. आई एम कलरिंग ओनली 5. ओके, आई डोंट हैव द कलर, दैट्स व्हाई आई एम शेडिंग. लेकिन आप लोगों को कलर ही करना है. यू कैन यूज एनी कलर्स. दैट मीन्स रेड ब्लू ग्रीन. आई एम सेइंग दैट वन. बट यू हैव टू यूज ओनली वैक्स कलर. ठीक है. मोम कलर या फिर पेंसिल कलर यूज करना है. डोंट यूज स्केच पेन एंड वाटर कलर, अदरवाइज द पेज की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं है, खराब हो जाएगी. ठीक है. सो आई होप यू understand this one. What we will do? First of all, we will count the number of objects. That is 10 objects. We will write here 10. And the question is saying that find the half. So we will write 1/2, which is denoting half. अगर 1/3 रहा तो we will write 1/3. If there is 1/4, yes, 1/4 means what? 1/4. Yes, 1/4. Then what we will do? We will write 1/4. Okay. और बस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे. We will divide the number by denominator. Obviously जब यहाँ पे
4 रहेगा तो यहाँ कुछ और नंबर रहेगा बिकॉज 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन। एंड नाउ हियर देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, इट इज अ क्वेश्चन नंबर डी which is on page number 162. So now we will find the half of 20. What is meant by 1 by 2? 1 by 2 means half of 20. So we will divide this 20 by 2. 20 को करो divide 2 से, 2 के टेबल में कब आएगा 20? कब आएगा? When the 20 will come in the multiplication table of 2. 2 10s are 20. 10 टाइम्स में आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ये भाई सबको, बस इजी है ना। इसमें भी सेम टू सेम, देयर इज अ 20 विच इज अ कलेक्शन। ओके, दैट इज अ 20, वी हैव टू क्रिएट द 4 ग्रुप ऑफ 20। 20 ऑब्जेक्ट में को हमको क्या करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स वी विल डिवाइड द 20 बाय 4। 4 के टेबल में 20 कब आता है? देखो आता है क्या? आता है 4 5 yes, 4 5 is 20, so the answer is 5. 3 के टेबल में 18, 3 5 15, 3 6 18, 6, अच्छा 6 है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ 30। 30 का हाफ करना है। ओके, लिसन केयरफुली। हाँ, वी नो दैट द टेबल ऑफ 2 अप टू टिल 20, हम लोग हमेशा टेबल जो है 2 के या 3 का, वॉट एवर द टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग सिर्फ 10 तक ही याद करते हैं। 2 10s, 5 10s, बट द मल्टीप्लिकेशन टेबल इज बियॉन्ड दी 10। yes, what is meant by multiplication? Multiplication means a repeated addition. It is not necessary that कि 10 times में repetition हमको पता है, but 11 times 12 times भी होता है। okay, so here what we have to do, if there is a quantity 30 का टेबल, हमको 2 का टेबल पढ़ना 30 आते तक, सिंपल बताओ, ठीक है। देयर इज अ 30 एंड वी हैव टू डिवाइड द 30 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। बट हम लोगों को जो 2 का टेबल है वो सिर्फ 10 तक 10 टाइम्स ही आता है। 2 10s is 20, but the multiplication is beyond the 10. 2 11s are 22, then 40 24, then 26। रिपीटेड एडिशन करते जाओगे तो वो नंबर 2 से इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इफ देर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, वी हैव टू डिवाइड दिस 30 का हाफ करना है ना। व्हाट इज द हाफ? 1 by 2, and the denominator is always tells us the number of parts, that is a total number of parts, है ना। total parts कितने हैं? so what we will do, we will divide the 30 by 2। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। so इधर करके देख लो। इफ यू डोंट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल, अगर आपको टेबल नहीं आता है, डोंट हेजिटेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय डिवीजन। हम लोग सिंपल डिवीजन कर देंगे, ठीक है। दैट इज 2, सो 2 and 30 इज देयर, सो टेक अ 1 digit, टेक अ 1 digit, 2 and 3, 2 1s is 2, 1 will be left over। जब माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा, है ना। तो अब आएगा 0 नीचे, 0 आएगा नीचे, and it becomes 10। now we have to divide this 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। now 2 5 is 10, you will get 15। 30 का आधा होता है 15, 15 1s are 15, 15 2s are 30, 2 टाइम्स में 30 आता है, ठीक है। so the answer is 15। got it? it is very very simple, don't take any टेंशन मत लो, बस इस नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। yes, why we have to divide? because the denominator is saying that total number of parts, हमको कितने ग्रुप्स में उसको डिवाइड करना है, एंड द डिवाइजन इज इक्वल शेयरिंग। डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वल शेयरिंग। सो वी हैव टू शेयर दिस 10 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स करना है, तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। व्हेन यू विल डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 5 5 इन ईच ग्रुप, दोनों में 5 5 आ जाएगा। एंड सिमिलरली हियर, व्हेन यू विल डिवाइड 30 बाय 2, 30 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 15, you will get the 15 objects in each group। 2 अलग अलग ग्रुप में 15 हो जाएंगे, ठीक है। एंड इफ देयर इज 5, अगर यहाँ 5 रहता तो, अरे कुछ नहीं, बस 30 को 5 से डिवाइड कर देते ना, हो गया जो भी आंसर आता,
है ना। समझे क्या? नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना मांगता है, ठीक है। क्यों डिवाइड करना मांगता है? बिकॉज दिस इज अ नंबर ऑफ पार्ट्स। समझ में आ गया? समझ गया होगा तो लिख लो। एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय। दिस इज अ लास्ट टॉपिक, यू हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। फिनिश कर लो एंड आई एम सेंडिंग द PDF एज सुन एज पॉसिबल। आपको थोड़ी देर में PDF मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय।